गुजरात के अमरेली जिले की राजूला तहसील के भेराई गांव में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच राजूला जाफराबाद खांबा क्षेत्र के विधायक हीराबाई सोलंकी प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे, हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। आइए देखते हैं यहाँ राजूला तहसील के भेराई गाँव में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थिति जानकारी मिलते ही राजूला जाफराबाद खांबा क्षेत्र के विधायक हीराबाई सोलंकी तुरंत भेराई गांव पहुंचे। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया, ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी संकट की घड़ी में सिर्फ एक फोन करने पर विधायक हीराबाई सोलंकी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार वे लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और प्रशासन के साथ समन्वय कर आवश्यक राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक की त्वरित कार्रवाई और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय वे हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और जलभराव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आइए देखते हैं राठौर महेंद्र भाई। જે મતા દેજો અમે એમ કહેતા હતા ને ઘડીએ ઘડીએ કહેવું પડે ને મારે કે ભાઈ હીરાભાઈ કોણ એમ, તો ખરેખર તમે જુઓ અમે એટલે માન્ય છે ભાઈ કે એ ગમે એટલા પાણી હોય ને અહીંયા ઈ પડી જતા હોય છે અને એક ફોનમાં એ લગભગ ટીમ્બીની ઓલું બાજુનું ગામ હતું અહીંયા સેવામાં હતા। અત્યારે હાલ જુઓ તમે અમારા ભેરાઈ ગામમાં જે લોકો ફસાયેલા છે એના માટે નાવની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, આવે છે થોડીક જ વારમાં। અને જો ભાઈ સાંભળો, બાલ બચ્ચા લઈને છે ને કોઈ ઘરમાં નહીં રહેતા। આજે વરસાદની હજુ પણ આગાહી છે। શું કીધું હમણાં છે ને જો નીકળાય હમણાં પાણી આટલું છે તો નીકળી જાવ, નીકળે રહી જાવ, એ ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરાવી કાઢશું આપણે। હું કીધું આ ગામના લોકો જો મદદ થાય છે ને સેવા કરી કાઢશે। તમે ઘરે નહીં રહ્યો આજે 2 દિવસ ને વરસાદની આગાહી છે, પછી અચાનક પાણી વધારે આવી જાય તો કોઈ નીકળી નહીં ઈકો બાર તમે। હમણાં નીકળી જાવ, તમને હાથ જોડીને વિનંતી છે। બાલ બચ્ચા નીકળો હમણાં બધા બહાર, આપણે જાઓ। આટલું કરજો મારી માં।